Hello student, today we are start in EVS standard second chapter number 6. Our festivals. Our festival is a celebration time when we are happy. जब हम celebrate करते हैं festivals तो हम कैसे होते हैं? Very happy. We celebrate many festivals. We are celebrate many types of different types of festival with our family and friends. With our family and our friends. We greet each others and exchange gift. हम क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं एंड एक्सचेंज गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं. फेस्टिवल यूनिट पीपल एंड स्प्रेड जॉय एवरीवेयर. ओके, टाइम टू डू. लुक एट द पिक्चर्स and write the sentence about each others. He is a Guru Nanak, Gautam Buddha and Jesus Christ. Write about them. We celebrate different types of festival in India. We are celebrate different types of festivals. Festivals are national festival and religious. How many types of festivals? 2 types of. First one national and second is religious. Okay, we also celebrate some harvest festival and we also celebrate some harvest festivals. First one, national festival. A national festival is a festival which is celebrated by the people of a nation. All the people who live in India and call his country their own are Indians. Here are 3 important days which all Indians remembers. Here 3 important days. नेशनल फेस्टिवल में 3 जो है बहुत मेन है जो इंडियंस हमेशा याद रखते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन इंडिपेंडेंस डे. ओके, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August every year. We are celebrate इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. Okay. Our country won freedom from the British rule on this day in 1947. Our country won हुई थी किससे? फ्रीडम मिला था हमें किससे? ब्रिटिश रूलर से. ओके, in 1947. Every year on this day we remember all those brave people who fight so hard for our freedom. इस दिन 15th अगस्त को हम रिमेम्बर करते हैं. किसको याद करते हैं? उन सभी पीपल्स को जो फाइट किए थे फ्रीडम के लिए. ओके, सेकेंड इज द रिपब्लिक डे. वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26th January every year. ओके, रिपब्लिक डे वी आर सेलिब्रेट 26th January in every year. India became republic on 26th January in 1950. इंडिया रिपब्लिक हुआ था 26 जनवरी को in 1950. On this day every year the president of India take the salute of the great parade in New Delhi. इस दिन क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? न्यू दिल्ली में लाल किला पे परेड को सल्यूट करते हैं ना, नेशनल फ्लैग होता है. ठीक है. थर्ड वन गांधी जयंती. वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd October. वी आर सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2nd October every year. महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन 1869. 2nd October को गांधी जी का बर्थ डेट था. ओके, इन 1869. गांधी जी डिड अ लॉट फॉर आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस. गांधी जी कैसे थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल थे, मैन थे जिसने अच्छा काम किया था इंडिपेंडेंस डे में फ्रीडम के लिए. द पीपल्स लव्ड हिम वेरी मच. द पीपल्स आर लव्ड हिम वेरी मच. दे कॉल्ड हिम बापू. दे आर कॉल्ड हिम बापू. वी आर कॉल्ड हिम बापू विच मीन्स फादर. बापू मीन्स फादर. The main functions he held at his समाधि at राजघाट in New Delhi. इनकी समाधि किधर है? राजघाट in New Delhi. Okay. Next topic, religious festivals. Okay, what is a religious festival? Some festivals are connected with religions. Some festivals are connected with religions.
In India, there are many religious festivals. In India, we are celebrate many others different types of festivals. Okay, people of different religions have different special day which they celebrate with their family and friends. Here are some religious festivals we celebrate in India. Here we are read the some others religious types of festival. First one, Deepavali. Diwali is celebrated by the Hindu. Diwali is celebrated by the Hindu. It is called the festival of light, and it is called also festival of light because we are हम क्या अलग अलग लैम्प लाइट लगाते हैं ना. On this day, people decorate their houses with candles and diyas. People decorate their house with the candles and diyas. हम decorate करते हैं ना. Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile on this day. Lord Rama क्या थे? Return हुए थे ना अयोध्या में 14 ईयर के वनवास के बाद. ओके. Hindus pray to Lord Ganesha and Goddess Lakshmi. इस दिन हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं लॉर्ड गणेशा और गॉडेस लक्ष्मी जी से. ओके. नेक्स्ट वन, ईद. Eid is the most sacred festivals of Muslim. Eid is celebrated by the Muslim peoples. Okay, it come at the end of holy month of Ramzan. ये कब आता है? End month of Ramzan. Muslim go to the mosque और ईदगाह टू ऑफर नमाज. वो मॉस्क्यू में जाते हैं और क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं. On this day, Muslim embrace and wish each other's Eid Mubarak. In this day, Muslim people कैसे विश करते हैं? ईद मुबारक. ओके. सेवैया is a special sweet dish prepared by the Muslim on this day. और इस दिन इनका स्पेशल स्वीट क्या होता है? सेवैया. ओके. नेक्स्ट वन, होली. Holi is also celebrated by the Hindu. Holi is also celebrated by the Hindu. It is also called the festival of color. It is also called the festival of colors. इसे हम क्या बोलते हैं? Festival of colors. On Holi, the young and old people spells colors water on each other. इस दिन हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे पे पानी, waters, colors एक दूसरे पे लगाते हैं ना, डालते हैं ना. दे ऑल्सो अप्लाई गुलाल ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन ईच अदर्स फेस. एंड हम क्या करते हैं? गुलाल लगाते थे एक दूसरे के फेस पे. ओके. नेक्स्ट वन, क्रिसमस. क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन. क्रिसमस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस. It celebrate the birth of Jesus Christ on 25th December every year. हम क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? 25th December. ओके. चर्चेस आर डेकोरेटेड ऑन दिस डे. इस दिन किसको डेकोरेट करते हैं? चर्च को. प्रेयर्स आर हेल्ड. अ डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री is placed inside the house. The family gathers around his trees and sing carol. इस दिन हम क्या करते हैं? क्रिसमस ट्री से डेकोरेट करते हैं और क्या गाते हैं? कैरोल्स गाते हैं. ओके. We also wish our Christian friends Merry Christmas. We also wish our Christian friends क्या बोलते हैं आप? Merry Christmas. These festivals bring fun and happiness to all. और ये सब फेस्टिवल्स हमें क्या देते हैं? बहुत हैप्पीनेस देते हैं. ओके. हम सभी को. ओके. टर्न द पेज. गुरु परब. गुरु परब इज द फेस्टिवल ऑफ सिख. गुरु परब किसका फेस्टिवल है? द फेस्टिवल ऑफ सिख. दे सेलिब्रेट गुरु परब टू मार्क द बर्थ ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु. इन दिस डे बर्थ था किसका? सिख गुरु का. फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक. हिज नेम वॉज गुरु नानक. दिस इज one of the most sacred festival of Sikh. On Guru Parva are decorated with flower and light. People are decorated flower Gurudwara with flowers and light.
People eat langar from the common kitchen. Langar is a free meals served in a gurudwara. और ये गुरुद्वारे में क्या सर्व होता है? लंगर. ओके. Now next one is harvest festival. A harvest festival is an annual celebrations that occurs around the time of the main harvest of given regions. There are many harvest festivals celebrated in the different parts of the country. अब जैसे कंट्री वाइज लेते हैं ना, वो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है. जैसे कि बिहू. बिहू इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय द पीपल ऑफ असम. बिहू कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? असम में. people make and eat special dish called laras, which is made of coconut and rice. ये laras किससे बनाते हैं? कोकोनट एंड राइस. ओके. जोलफल एंड पीठा, which bring a new charm to the whole season. They sing folk song and dance. Pongal. Pongal is the most important festival of Tamil Nadu. It is celebrated for the 3 days. During Pongal, the people worship rain, sun, and bull. They cook rice with sugar and milk and offer it to the sun god. Onam is the most colorful festival of Kerala. It celebrates for 4 days. Decorated elephants are taken out the processions, boat race, and other main attractions of these festivals. Okay, move the exercise. Exercise number 8. Pick the correct options. A festival is celebrated time when people are happy. We celebrate Independence Day on 15th August. Mahatma Gandhi was born in the year 1869. Diwali is celebrated by the Hindu. We also wish our Christian friends Merry Christmas. And the page, filling the blanks. Exercise number B, filling the blanks by using this help of this box. First, we celebrate many festivals with our family and friends. Diwali is celebrated by the Hindu. Gandhiji was called Bapu by the peoples. Onam is the most colorful festival of Kerala. Answer the following questions. Which whom do we celebrate festival? With our family and friends. What are harvest festivals? Okay, in this answer is here, page number 30. A harvest festival is an annual celebrations that occur around the time of main harvest of a given regions. Okay. Question number 3. Write the three name of any 3 religions. Write the name of any 3 religious festivals. Do write yourself Diwali, Holi, Christmas as your wish. Okay. Question number 4. When do we celebrate the Republic Day? Every year. So we celebrate the Republic Day on 26th January in every year. Okay. Complete the chapter. Thank you.